Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss the next organelle of the cytoplasm of the cell, mainly eukaryotic cell. This is the peroxisome. Peroxisome is also called the microbodies. Mainly, peroxisome are involved in the detoxification and lipid metabolism. So, peroxisomes are mainly found in the liver cells. Peroxisomes are enclosed in single membrane and are 0.5 micrometer in diameter. Single membrane organelle. In some mammalian tissue, peroxisomes form an extensive network often compared to lysosome. Peroxisomes differ in that they hold antioxidative enzymes. लाइसोसोम और पैराक्सिसोम में जो मेजर डिफरेंस ये है कि लाइसोसोम में जो एंजाइम्स होते हैं वो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं while the enzymes that are mainly found in the peroxisomes these are the oxidative enzymes. They work in the presence of oxygen. Peroxisome contain more than 50 enzymes and self-replicate by enlarging and then dividing. The number of enzymes are more than 50 and the lysosome is self-replicating because it increases its number by itself. They contain H2O2 producing enzymes like oxidases and catalases as well as the oxidative enzymes like peroxidase, Catalase, glycolic acid oxidase and some other enzymes. Mainly इसमें H2O2 producing enzymes होते हैं और H2O2 जब प्रोड्यूस होता है सेल में तो H2O2 जो हाइड्रोजन परऑक्साइड है ये सेल के लिए इटसेल्फ भी डेंजरस होता है. सो इससे गेट रेड करने के लिए इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए पेरोक्सिसोम में जो सेकंड एंजाइम है उसको कहते हैं कैटालेज. कैटालेज डिटॉक्सिफाई द H2O2 इनटू द वाटर एंड ऑक्सीजन. Proteins are selectively imported into peroxidases. Peroxisomes contain no DNA or ribosome. इसके पास कोई DNA और कोई राइबोसोम नहीं है and have no means of producing proteins. ये अपनी प्रोटीन खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकता, इसलिए इसकी जो प्रोटीन होती हैं वो साइटोप्लाज्म से ट्रांसपोर्ट होती हैं. Instead, all of these proteins are imported across the membrane. Peroxisome, it is a roughly spherical structure. This is a spherical structure. Mainly have the granular crystalline core. जो इसका core होते हैं, this is like the crystalline. It is this crystalline core has a dense collection of enzymes. These enzymes mainly involved in the lipid metabolism and in the detoxification of different types of toxic components. Mainly, peroxisome work in the cooperation with the chloroplast and the mitochondria in different metabolic functions. Structure of the peroxisome. Peroxisomes are variable in size and shape. इनकी shape और size variable होती है depending upon their location, but usually appear circular in cross section having diameter between 0.2 and 1.5 micrometer. They have a single limiting unit membrane. Single membrane होता है of lipid and protein molecules which encloses their matrix. So it is a single membrane bound organelle that surrounds different enzymes or different matrix having the enzymes. Like mitochondria and chloroplasts, they acquire their proteins by selective import from the cytosol. तो इसकी proteins cytosol से import होती हैं. Peroxisomes resemble the endoplasmic reticulum by being self-replicating. ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ रिजेंबल करता है क्योंकि ये खुद रिप्लिकेट करता है. मेम्ब्रेन इनक्लोज ऑर्गेनेल्स दैट एग्जिस्ट विदाउट जीनोम ऑफ इट्स ओन. इसका अपना जीनोम नहीं है लेकिन इसकी जो मल्टीप्लिकेशन है वो ऑटोमेटिकली इसकी सेल्फ रिप्लिकेशन से होती है लाइक द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. Peroxisomes are usually diverse organelles. इसकी बहुत डाइवर्सिटी मौजूद होती है. इवन एक सिंगल ऑर्गेनिज्म में इसकी डाइवर्सिटी है. एंड इवन इन द वेरियस सेल टाइप्स ऑफ सिंगल ऑर्गेनिजम्स दे मे कंटेन डिफरेंट सेट्स ऑफ एंजाइम्स. एक ही ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट सेल्स में जो पेरोक्सिसोम्स होते हैं उसमें डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं. दे कैन आल्सो अडॉप्ट रिमार्केबली टू चेंजिंग कंडीशंस. तो डिफरेंट कंडीशंस के मुताबिक ये अपने आप को अडॉप्ट कर सकते हैं पेरोक्सिसोम्स. ये सेल्स grown on sugar, for example, have small peroxisomes. वो yeast cells जो शुगर को एज ए सोर्स ऑफ फूड इस्तेमाल करते हैं उनमें peroxisomes की
अमाउंट या नंबर कम होता है। बट व्हेन सम यीस्ट आर ग्रोन ऑन मिथेनॉल, जब मिथेनॉल एज ए मीडिया के तौर पर इस्तेमाल होगा, देयर डेवलप लार्ज पेरोक्सिसोम्स, उसमें जो पेरोक्सिसोम्स की तादाद होगी बहुत ज़्यादा होगी और वो बड़े होंगे। दैट ऑक्सीडाइज मिथेनॉल एंड व्हेन ग्रोन ऑन फैटी एसिड्स दे डेवलप लार्ज पेरोक्सिसोम्स दैट ब्रेक डाउन फैटी एसिड टू एसिटाइल कोएंजाइम बाय बीटा ऑक्सीडेशंस। जो फैटी एसिड में जब ग्रो करेंगे तो उसमें मजीद उनकी जो अमाउंट है और जो साइज है वो बड़ा होगा। ग्लाइसोसोम्स अकर इन द सेल्स ऑफ यीस्ट, न्यूरोस्पोरा and oil rich seeds of the many hydro plants। तो ग्लाइसोसोम जो हाइड्रो प्लांट्स में पेरोक्सोम को हम ग्लाइसोसोम बोलते हैं because they are responsible for the glycoxidate cycle। They resemble with peroxisomes in morphological details except that their crystalloid core consists of dense rods 6 micrometer diameter। Chemical composition of the peroxisome. Internally, peroxisome contains several oxidases like catalase and urate oxidase enzymes that use molecular oxygen to oxidize organic substances, in the process forming hydrogen peroxide, a corrosive substance। तो different enzymes इनकी composition में basic component होते हैं। Catalase is present in large amounts to degrade hydrogen peroxide to yield water and oxygen। तो इसी H2O2 को हाइड्रोजन पेरोक्साइड को डिग्रेड करने के लिए कैटालेज एंजाइम होना जरूरी है, क्योंकि कैटालेज itself is a toxic। A specific sequence of 3 amino acids located at the C terminus of many peroxisome proteins function as import signals। तो मुख्तलिफ एंजाइम को import सिग्नल के लिए C terminus हेल्प करता है। Other peroxisomal proteins contain a signal sequence near the N terminus. If either of these sequences is experimentally attached to cytosolic protein, the protein is imported into the peroxisomes। So, प्रोटीन की जो import है वो signal mediated है। It may be the C terminus or it may be the N terminus। The import process is yet to be understood completely, although it is known to involve soluble receptor proteins in the cytosol that recognize the targeting signal as well as docking proteins on the cytosolic surface of the peroxisomes। जो डिटेल मैकेनिज्म है वो import का वो complete known नहीं है, लेकिन जो रिसेप्टर्स होते हैं साइटोसोल में they are responsible for the transport of different types of proteins to the peroxisomes। At least 23 distinct proteins called the peroxins, जो peroxins protein होती हैं, these participate as a component in the process which driven by the ATP hydrolysis। तो peroxin proteins are responsible for the transport। Oligomeric proteins do not have to unfold to be imported into the peroxisomes, indicating that the mechanism is distinct from that used by the mitochondrial chloroplast। And at least one soluble import receptor, the peroxin PEX5, accompanies its cargo all the way into peroxisomes and after cargo release cycles back out into the cytosol। तो most important जो role है transport में import of different proteins into the cytosol में peroxin PEX5 का बहुत important role है। These aspects of peroxisomal protein import resembles protein transport into the nucleus। इसका जो मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट है दैट रिजेंबल विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ द प्रोटीन टू द न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन में प्रोटीन इन्वॉल्व होती है उसकी ट्रांसपोर्ट जैसे हो रही है, इस सेम मैकेनिज्म इन्वॉल्व हो रहा है इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन टू पेरोक्सिसोम। फंक्शंस ऑफ द पेरोक्सिसोम्स। पेरोक्सिसोम मेनली जो इसका बेसिक फंक्शन है वो डिटॉक्सिफिकेशन है और मेटाबॉलिज्म ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फैटी एसिड्स हैं। पेरोक्सिसोम इन्वॉल्व इन द हाइड्रोजन पेरोक्साइड मेटाबॉलिज्म एंड डिटॉक्सिफिकेशन। पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड की सिंथेसिस भी हो रही है और हाइड्रोजन पेरोक्साइड की डिटॉक्सिफिकेशन भी पेरोक्सिसोम की मदद से हो रही है। Peroxisomes are so called because they usually contain one or more enzymes, D-amino acid oxidase and urate oxidase. These are the enzymes that use molecular oxygen to remove hydrogen atom from specific organic substrates in an oxidative reaction that produces hydrogen peroxide। इसका जो पेरोक्सिसोम का नाम ही हाइड्रोजन पेरोक्साइड की प्रोडक्शन की बेस पे है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसके साथ हाइड्रोजन अटैच है, ऑक्सीजन है, तो ये जो एंजाइम है डी अमाइनो एसिड ऑक्सीडेज और यूरेट ऑक्सीडेज, दीज एंजाइम आर रिस्पांसिबल टू रिमूव द हाइड्रोजन फ्रॉम द ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट्स। तो ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट्स से हाइड्रोजन को रिमूव करेगा
ऑक्सीडेटिव रिएक्शन के दौरान, और उसके दौरान क्या होगा, H2 और O2 आपस में रिएक्शन करने के बाद, कंबाइन होने के बाद H2O2 बन जाएगा और ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्री जाएगा। सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ H2O2 प्रोडक्शन। तो H2O2 प्रोडक्शन कहाँ पे हो रही है, पेरोक्सिसोम में हो रही है। किसकी मदद से, डी अमीनो एसिड ऑक्सीडेज और यूरिएट ऑक्सीडेज की मदद से। Almost half of the alcohol one drinks is oxidized to acetaldehyde in this way. However, when excess H2O2 accumulates in the cell, catalase convert H2O2 to hydrogen and oxygen, क्योंकि जो H2O2 ये टॉक्सिक है, तो H2O2 will be converted into water and oxygen that are the less toxic or non-toxic. Catalase also utilizes the H2O2 generated by the other enzymes in the organelle to oxidize a variety of other substrates like phenol, formic acid, formaldehyde, and alcohol. This type of oxidative reaction occurs in liver and kidney cells where the peroxisome detoxify various toxic molecules that enter the bloodstream. तो जो detoxification का process mainly involve होता है वो liver और kidney cells में होता है, इसलिए peroxisome का जो number है, जो amount है, वो liver और kidney cells में ज़्यादा होती है। Peroxisomes also play an important role in the photorespiration process. Photorespiration process mainly occur in the green leaves. In the green leaves, there are peroxisomes that carry out a process called photorespiration, which is light stimulated production of carbon dioxide that is different from the generation of carbon dioxide by mitochondria in the dark. चूंकि ये respiration जो हो रही है ये light के मौजूद में हो रही है, that's why it is called the photorespiration. In photorespiration, glycolic acid, a two-carbon product of photosynthesis, is released from chloroplast and oxidized into glyoxylate and H2O2 by a peroxisomal enzyme called the glycolic acid oxidase. Peroxisome में जो glycolic acid oxidase है, ये glycolic acid को glyoxylate और H2O2 में convert कर देता है. Later on, glyoxylate is oxidized into carbon dioxide and formate. जो फोटोसिंथेसिस के दौरान ग्लाइकोलिक एसिड है, ये जो सिक्रीट हुआ, ये जो रिलीज हुआ, इसके रिलीज होने के बाद इसका रिएक्शन होगा ऑक्सीजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ द एंजाइम ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज। ग्लाइकोलिक ऑक्सीडेज की मौजूदगी में ग्लाइकोलिक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा ग्लायोऑक्सिलेट और H2O2 में। नेक्स्ट स्टेप में जो ग्लायोऑक्सिलेट है और H2O2 है, ये कन्वर्ट हो जाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और फॉर्मेट में। तो इसलिए ये जो हेल्पफुल करता है फोटो रेस्पिरेशन में, तो इट हैज एंजाइम दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज, द सो कॉल्ड ग्लायोऑक्सिलेट साइकिल। फैटी एसिड ऑक्सीडेशन में पेरोक्सिसोम का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। A major function of the oxidation reaction performed in peroxisome is the breakdown of fatty acid molecule. In mammalian cells, beta oxidation occurs in both mitochondria and peroxisomes. In yeast and plant cells, however, this essential reaction occurs exclusively in the peroxisomes. चूंकि yeast में और plant में ये रिएक्शन कम्प्लीटली peroxisome में हो रहा है, और mammals में ये जो फैटी एसिड की मेटाबॉलिज्म है, ये peroxisome में भी और साथ माइटोकॉन्ड्रिया में भी हो रही है। Peroxisomal oxidation of fatty acid yield acetyl groups and is not linked to ATP formation. The energy released during peroxisomal oxidation is converted into heat, and the acetyl groups are transported to the cytosol where they are used in the synthesis of cholesterol and other metabolites. तो ये कोलेस्ट्रॉल सेंस में भी हेल्पफुल होते हैं और साथ लिपिड सेंस में भी हेल्पफुल होते हैं फैटी एसिड ऑक्सीडेशन मैकेनिज्म peroxisomes. Formation of plasminogens. Plasminogens, these are the layers of the membranes. An essential biosynthetic function of animal peroxisome is to catalyze the first reaction, the formation of plasminogens, which are the most abundant class of phospholipids in the myelin. Deficiency of plasminogens causes profound abnormalities in the myelination of nerve cells, which is one reason why many peroxisomal disorders lead to neurological diseases. इस वजह से जो ब्रेन डैमेज है या न्यूरोजेनेटिव डिजीजेज हैं, वो peroxisome की डिफिशियंसी की वजह से या उनकी डिसऑर्डर की वजह से ज़्यादा होती हैं। Peroxisomes are also important in the plants. Two different types have been studied extensively. One type is present in the leaves, where it catalyzes the oxidation of a side product of the crucial reaction that fixes carbon dioxide in the carbohydrate. This process is called photorespiration because it uses up oxygen and liberates carbon dioxide. हम डिस्कस कर चुके हैं।
The other type, peroxisome, is present in germinating seeds, where it has an essential role in converting the fatty acids stored in seed lipids into the sugars needed for the growth of young plants. जो सेकंड पेरोक्सिसोम का रोल है प्लांट्स में वो जेनेटिक सीड्स में है जेनेटिक सीड्स में पेरोक्सिसोम्स क्या करते हैं दीज कन्वर्ट द फैटी एसिड दैट आर स्टोर्ड इन द सीड into the sugars that are used in the growth or in the development of the seed as a source of energy. Because this conversion of fats to sugar is accomplished by the series of reactions known as the glyoxylate cycle, these peroxisomes are also called glyoxysomes. इसलिए इनको glyoxysomes भी कहते हैं. In the glyoxylate cycles, two molecules of acetyl coenzyme are produced by fatty acid breakdown in the peroxisome are used to make succinic acid, which then leaves the peroxisome and is converted into glucose. The glyoxylate cycle does not occur in animal cells, and animals are therefore unable to convert the fatty acid in fats and carbohydrates. तो glyoxylate cycle animals में नहीं होता इसलिए वो जो fatty acids हैं वो convert नहीं होते carbohydrates में. Peroxisome and diseases. In most eukaryotic cells, the peroxisome is the principal organelle in which fatty acids are oxidized, therefore generating precursors for important biosynthetic pathways. मुख्तलिफ biosynthetic pathways के जो precursors synthesize होते हैं वो peroxisomes में होते हैं. In the human genetic disease X-linked adrenoleukodystrophy (ADL), peroxisomal oxidation of very long chain fatty acid is defective. इसमें जो लॉन्ग चेन फैटी एसिड की जो ऑक्सीडेशन है वो डिफेक्टिव होती है दैट लीड्स टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूरोजेनरेटिव डिजीजेस. The ADL gene encodes the peroxisomal membrane protein that transports into peroxisomes and enzymes required for the oxidation of these fatty acids. Persons with severe form of ADL are unaffected until mid-childhood when severe neurological disorders appear, followed by death within a few years. Zellweger syndrome is an inherited human disease in which a defect in importing proteins into peroxisomes leads to severe peroxisomal deficiency. These individuals whose cells contain empty peroxisomes have severe abnormalities in their brain, liver, and kidneys, and they die soon after birth because they have no detoxification processes. One form of this disease has been shown to be due to a mutation in the gene encoding a peroxisomal integral membrane protein, the peroxin PEX2, involved in the protein import. A milder inherited peroxisomal disease is caused by a defective receptor for the N-terminal import signals. जो प्रोटीन import करती हैं import of different enzymes में helpful होती हैं अगर उनमें कोई different deformity को abnormality आ गई that always leads to different types of disorders. That's all about the peroxisomes. Peroxisome is single membrane organelle having the major different types of enzymes, help in the oxidation of different types of component, help in the detoxification and lipid and fatty acid metabolism. Thank you so much.